Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. To all of my viewers, I hope you all are doing well. Today we are going to learn alphabets and their sound in a very easy way, in a very simple way. So we are going to start with letter A, and I'm going to tell you the sounds till then Z. So here we start. Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start alphabets and their sounds. Okay, the first alphabet which we are going to learn is A. ठीक है, ए, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी है हमारे पास बेबी ए. ओके, ए एंड द साउंड ऑफ लेटर ए इज़ ए, नॉट अ. द साउंड ऑफ लेटर ए इज़ ए. द साउंड ऑफ लेटर ए इज़ ए आंट. द साउंड ऑफ लेटर बी, बी, ठीक है. द साउंड ऑफ लेटर बी इज़ ब, ब बैट, ब बैट, राइट. ओके, द थर्ड लेटर इज़ सी एंड द साउंड ऑफ लेटर सी इज़ ख. The sound of letter C is k, k cat, k cat, k cat. Okay. Next letter is D, and the sound of letter D is d. Good. The sound of letter D is d. Okay. Next letter which we are going to learn is E. E, and the sound of letter E is A. The sound of letter E is A. The sound of letter E is A. Egg. A egg. Okay, next letter is F, and the sound of letter F is F. The sound of letter F is F. F, frog. F, frog. F, frog. Okay, the next letter is G, and the sound of letter G is G. The sound of letter G is G. G, goat. G, goat. G, goat. Okay, next letter is H, and the sound of letter H is H. अपने आप मुंह के आगे हाथ रखें, जैसे हम अपनी ब्रीदिंग को स्मेल करने के लिए या ब्रीदिंग को फील करने के लिए हम जब हाथ आगे रख के करते हैं तो द साउंड ऑफ लेटर एच इज ह. ठीक है, द साउंड ऑफ लेटर एच इज ह. एंड ह हाउस, ह हाउस. ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास लेटर है आई, एंड द साउंड ऑफ लेटर आई इज ई. The sound of letter I is E. E, ice cream. E, ice cream. Next letter is J, and the sound of letter J is J. The sound of letter J is J. J, jeep. J, jeep. Next letter is K. K. K की sound. K की sound. K. K की sound. K. K की sound. K. Next letter is K. K की sound. K. And the K stands for, या K से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड वो क्या है? कैंगरू. का कैंगरू. का कैंगरू. नेक्स्ट लेटर इज L. नेक्स्ट लेटर इज L, एंड द साउंड ऑफ लेटर L इज L. साउंड ऑफ लेटर L इज लेम. लेम. राइट. Next letter is M, and the sound of letter M is The sound of letter M is mango. 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 Next is N, and the sound of letter N is The sound of letter N is nail. Nail. Okay. Next letter is O, and the sound of letter O is O. The sound of letter O is O. Owl. Owl. Next is P. The sound of letter P is P. Panda. 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 ओके जी, नेक्स्ट हम आगे मूव करेंगे. जल्दी से हम अपने तमाम लेटर्स को कंप्लीट करते जा रहे हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास लेटर आ रहा है वो है Q, एंड द साउंड इज Q इज quill. Quill. Next is R, and the sound of letter R is R. Right? Red. Red. Okay. Next letter is S. The sound of a snake, right? Spider. Next is T. T की sound क्या है? T. Tiger. Okay. Next letter which we are going to learn is U, and the sound of U is A. The sound of U is A. Umbrella. Umbrella.
ओके, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, ए, ई, आई और यू की साउंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको साथ करके नेक्स्ट वीडियो में अपनी बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ वी एंड द साउंड ऑफ वी इज़ व। द साउंड ऑफ वी इज़ व। ये प्लेन साउंड है, सिंपल साउंड है, सॉफ्ट साउंड है। आगे जब हम W पढ़ते हैं तो उसकी साउंड जो है वो भारी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और उसको कहते हैं वो। वो, वो, वेल, वो, वेल। वी, व वायलिन, व वायलिन, व वायलिन, एंड द नेक्स्ट इज वो, वो, वेल। नेक्स्ट इज एक्स, एक्स की साउंड है right, and now we are going towards the ending, and the next letter is Y, Y की sound है य, Y की sound है य, य, yogurt, य, yogurt, य, yogurt, and the next letter is Z, and the sound of letter Z is Z, zoo, Z, zoo, Z, zoo. Okay. So today we learned different sounds of different alphabets, but जब हम इन sounds को याद कर रहे होते हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम भी आती है, जैसे A अल्फ़ाबेट की साउंड याद करने में, और इसी तरह से E अल्फ़ाबेट की साउंड को याद करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मिक्सअप हो रही होती हैं। इसी तरह से I का साउंड को रिमेंबर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और इसी तरह से हमारे पास एक अल्फ़ाबेट आता है U, उसमें हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में in my next video I will tell you the solution to remember the sounds of these alphabets, inshallah. So stay tuned and do subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.